Good morning, everyone. Let's open our cameras to begin our session. It shows that you are the serious people. I हो और फायदा नहीं उठाओगे जब तक आपका energy exchange नहीं होगा. In terms of opening your camera, when your camera is open, it says, yes, I'm ready for blessings to come through my door, through my heart. So we are connected at 3 levels. So those 3 levels can only be done if you are 100% present. And you know what? I have made the mistake so many times sitting behind the camera and dozing off to something, sometimes sleep, sometimes indulge in something else. And the important thing which you were to receive on that day, the mission is not accomplished. So if you are investing time somewhere, if you don't have difficulty, invest 100%. By the way, may I know who are coming for day one and they are serious? 1NS. Write it down in the chat box. 1S. So we are reading this book every day. The name of the book is Magic. As the date says, it's day 15. So is the chapter 15 of this book. If you're coming for the first time and thinking that you can only begin from the beginning like day one, you're making big mistake. Because this book has nothing to do with the past lessons of last 15 days. Your magic you can create from today, taking it as a day one. And if you're very limited, thinking, no. First I have to do the 14 days, then only I'll begin my journey. Choice is yours. You can delay the magic. But if you're serious, as you said, that S, though only one person has said S, like rest are like maybe sleeping, maybe busy doing many other things I told you, then you're not the serious person. So those people who are serious, whatever your language is, Hindi or English, 30% of the magic is in reading magic book. Why do I call it 30%, not 100%? Because it has got a practice. If just come like Lena, since 2 days she's trying to listen, nothing wrong. But understanding is not important, taking action is important. A human has also a frequency like a mobile has, like TV has, like everything has. The human frequency is made up of 4 things: feelings, thoughts, beliefs, and actions. If any one of them is not inclined, not balancing you, you cannot manifest any of your goal. So if you're not taking action, you're delaying the success, you're delaying the magic. Nothing wrong. The right day has to come. But will you think the day will come automatically? Yes, it will come, but you will lose the magic because you've not taken action. And when you listen to the chapter, you've got every step to follow. Even if you don't read that chapter, you've got the practice action to take, and you can create magic today only. Do you know that? And if you create magic today and you share tomorrow, universe is listening that this is the person who is grateful, who is doing the task. I have to give the rewards. Universe is always saying, your wish is my command. If you don't tell universe what your wish is, and if you're not grateful for things you've already given, which is in abundance, then probably you are at the wrong place and your timing is wrong as well. But if you want to create your time, 30% learn from today as a theory, then this is a matching journal which everybody is using in creating magic. This is matching to this book. What we are going to learn, we will write in that as a practice. This is called next 30%. The 40%, which is major, which we come in the evening and we rewire our brain. Like because of the difficulties in our life, we've become limited.
हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, ये कैसे होगा, वो कैसे होएगा. वी आर सो मच इनटू वाइज एंड वी आर ऑलवेज वेरी वेरी लॉजिक, एंड यू मिस द अपॉर्चुनिटी. ऐसा कोई है जिसको आज से 40-50 से साल पहले बहुत थोड़े से पैसों के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदने का ऑफर मिला हो, और वो 50 साल से रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने वो वाला एक्शन क्यों नहीं लिया? एनीबडी? 50 से 40 से. सो अभी कितनी देर तक रिग्रेट करोगी लीना? आज फिर से वैसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जिंदगी के हर हसीन सपनों को पूरा कर सकते हो. ये कोई झूठा वादा नहीं है. एवरी डे यू विल सी सो मेनी पीपल आर फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स. अगर आपको ट्रस्ट करने में टाइम लगता है तो आप अपनी गेम खेलिए, आप हमारा ट्रस्ट बोरो कर लीजिए. आप सोच लीजिए कि जो लोग अपने मैजिक शेयर कर रहे हैं, हम उनके ट्रस्ट पे हम ये एक्शन लेंगे. जब आप एक्शन लेते हो और यूनिवर्स को कहते हो मैंने अपना काम कर दिया, नाउ इट्स योर चांस, तो यूनिवर्स को, पूरी कायनात को पलटना पड़ता है आपका सपना पूरा करने के लिए. बट इफ यू आर नॉट रेडी फॉर ऑल दैट, विच इज ओके, बट इफ यू आर रेडी, take action, take massive action. Did you see Twinkle Khanna had come the other day and she was talking about her illness, and she listened to the healings already recorded on my YouTube account, and she felt so good, and she said that she invested maximum time in listening and understanding, and now she has a hope. The difficulty she's going through has a possibility that she will be healed 100% miraculously, and again she will deal her body like a temple and will worship again, and then she will live ever after in the mind, body and soul, which is the most healthiest. उन्होंने एक्शन लिया. एक्शन लेके यहाँ आई तो आपको पता है मेरे से भगवान ने कौन सा एक्शन दिलवाया? एनीबडी रिमेंबर? कि आई एम रेडी टू डू वर्क फॉर दिस community who's suffering from deadly disease, and there is solution is there, the doctors and everybody is doing. Yes, and I took an action immediately that I'll be coming free of cost for all those people who want to be healed. Maybe I'll start healing them every day if God permits me and gives me and makes me to do this task. I am surrendered. If I was not taking action, how would that child be helped? Anybody? But because I'm aligned with all my feelings, thoughts, beliefs, and actions, God is working through me, using me as an instrument, and we will be seeing the big, 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 big magics in this area as well. And now, especially those who have some relatives, know somebody far or nearer, and are suffering from it, 1st March is a date we are starting our 5 days 555 visualization to heal special uh, special kind of humanity who are looking for some magical solution, some divine grace in their body. But if we don't contribute, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम मैं मेरा, then we are not born. We have to born again and live this troublesome life again. But if you contribute the way God is using me as an instrument and doing all the tasks, your life not only will change, your generations will reap the reward. I don't know how serious you are, and I don't have to push you, but yes, if you are awakened soul, you will take massive action and we will do the task God has given us to do. Thank you so much, Poonam. Thank you, thank you, thank you for being in my life. Beauty lies in the eyes of the beholder. सो यस, महाशिवरात्रि आप जो भी उनके लिए करते हो, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आप इसको कोई भी मीनिंग दे सकते हो. तो मैं कहूँगी कि जो शिव की पूजा करते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं. शिव ने अपनी पूरी लाइफ कंट्रीब्यूट की फॉर ह्यूमैनिटी, एंड आज जो धरती है
उनकी एनर्जी पे टिकी हुई है. इज दैट ट्रू? द फाउंडेशन, द क्रिएशन, द पार्ट Shiva has done to our life is the most miraculous. Let's go further ahead. शाम को हम लोग आपके जितने लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, तो उसको हम ब्रेक करते हैं. उसको एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ताकि नए आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स, आपको पता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जैसे ही हमारी आंखों के आगे कुछ भी आता है तो न्यूरो ट्रांसमीटर हमको इमेजेस देता है और बताता है, आइस के थ्रू इमेजेस देता है और बताता है कि ये चीज़ है, ये गर्म है, ये ठंडी है, इसको छूऊंगा तो हाथ कट जाएगा, ये छूऊंगी तो करंट आ जाएगा. तो वो सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स करते हैं. बट वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जब हम बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करते हैं ज़िंदगी में, तो हमारा माइंड लिमिटेड कर देते हैं, तो हमें आगे काम नहीं करने देते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखोगे जो पेशेंट्स आप हॉस्पिटल में देखते हो, कितने डिवास्टेटेड होते हैं. उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो अब कुछ मैजिक नहीं होने वाला. उनको मैजिक का नाम से भी नफरत है. उनके सामने बात भी करो तो वो कहते हैं हेल विद यू एंड दिस स्ट्रैटेजी. एंड वो लोग इतने लिमिटेड हो जाते हैं कि उसकी वजह से वो आगे नहीं चल पाते. उनको ब्रेक करने के पैटर्न को बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. जैसे लैपटॉप में अगर सॉफ्टवेयर ऑब्सलीट हो गया है, तो हमें उसको नया चलाने के लिए नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है. तो वो फिर से वैसे काम करने लग जाता है जैसे वो नया करता है. सिमिलरली जब हमारे ब्रेन के भी सॉफ्टवेयर्स चेंज हो जाते हैं, तो हम एक नई एनर्जी में आ जाते हैं. उस नई एनर्जी से हम कुछ भी कर पाते हैं. तो अगर आप रेडी हो उसके लिए, विच इज़ द 40% ऑफ द सक्सेस फॉर्मूला, देन यू नीड टू कम एंड रीड दिस बुक. Learn from chapter 15. Do the task Rhonda has given in the book, in this journal, and then revive your brain in the evening. We only come from Monday to Friday. Saturday, Sunday is off. So people who want to come in the evening, the link has been shared. They are paid programs. It's not compulsory at all. Don't think here there is a sale going on. It is for your good. हम लोग क्या एक महीने में 50 रुपए का या 100 रुपए का खाना खाते हैं क्या रोजाना? दैट इज फूड फॉर द बॉडी. खाते हैं 100 रुपए का, क्यों नहीं खाते सिंधु? फ्रूट लेने जाओ, आज कितना महंगा है. सब्जी कितनी महंगी है. बनाने के लिए हर चीज, कौन सी चीज सस्ती है? हम अपनी बॉडी को कम से कम 100 रुपए का रोज खाना खिलाते हैं, मेडिसिन खिलाते हैं. मेरा 50,000 रुपये का खर्चा था जब मैंने सर से ट्रीटमेंट नहीं लिया. तो अब वो सेव होने लग गया है ना. तो अगर 50,000 को, हाँ, मैं कहते 30,000 को भी माने तो मेरा 1,000 रुपये का खर्चा था. हाँ, अब 10,000 रह गया है. तो कैसे हुआ वो? ऐसे ही बुक को पढ़ते 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 मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई. मुझे सही आयुर्वेदिक डॉक्टर, डॉक्टर कर्नल एस के शर्मा मिल गए. तो कहने का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं पैसा डाल रहे हैं. मैं दवाइयों में डाल रही थी, पर मैं हील नहीं हो रही थी. मैं दिन दिन बीमार होती गई. और एक दिन ऐसा आया कि मुझे चलना भी दूभर हो गया. मैं बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, चल नहीं सकती थी. काइंड ऑफ बिल्कुल स्टक. पीपल हैव सीन मी. इन जनवरी ऑल्सो आई वॉज द सेम. यस लीना, तो 3,000 में अगर आप अपने ऊपर 100 रुपया अपने फूड फॉर द सोल नहीं देते हो तो 3,000 भी बेकार है. मैं तो वो 3,000 भी लगा के अपने आप को बचा नहीं पाई. ज्यादा बीमार ही किया मैंने अपने आप को. दिखता था मैं ठीक हो रही हूँ, बट पेन ने कभी नहीं छोड़ा मुझे. हर समय मैं हीटिंग पैड लेके बैठती थी, हर बॉडी में हर पार्ट में दर्द होता रहता था. एंड अब दवाई भी नहीं खाती, 3,000 भी नहीं लगाती, सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वेस्ट किया है. एंड आई एम टुडे लिविंग अ मेडिसिन फ्री लाइफ. तो चॉइस आपकी है. आपने सीखना है तो आपको 1,220 रुपये इस जर्नल के हैं, और जो शाम का सेशन है वो 1,310 रुपये हैं. जो सीरियस लोग हैं उनको ये स्टेप लेके ही आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी. इट्स नॉट कंपल्सरी. डोंट थिंक यू दैट दिस इज अ सेल प्रोग्राम. इट इज़ फॉर यू टू गिव द गाइडेंस. आप पहले एक महीना फ्री वाला प्रोग्राम जो मैं सुबह पढ़ाती हूँ उसमें आइए, पर उसको फॉलो करिए. क्या होता है जब हम पैसा नहीं लगाते, हम सीरियस नहीं होते.
जैसे आपने 2 दिन निकाल दिए, अब अगर आप पैसा दे के आते तो आप एक एक दिन की वैल्यू निकालते। तो इसलिए मेरे कोच ने बताया कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने मास्टर्स पे काम कैसे किया जाए, मास्टर्स मुझे अफोर्ड कर सकें, तो मैंने ये प्रोग्राम गॉड ने मेरे से डिज़ाइन करवाया। So with that, I take leave to give you more information and we'll listen to Sindhu, what she wants to say, what magic she has created to inspire us कि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. Let's listen to Sindhu. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, 2 days before we traveled Tirupati, ma'am. Mhm. For return ticket, my husband ticket got confirmed. Mine does not. What I thought is it's a very rush train, ma'am. Mhm. I'm very scared. Before we started to train, I put magic dust on TTR. I put magic dust on TTR. We enter into the cabin, Train. ma'am. Mhm. I looked the TTR. He looking like a very strict person. Mhm. He allocated my husband ticket a very small place. It's a very uncomfortable seat. Upper berth, it's very small. He's a 108 kg, so he didn't comfortable with that, and he allocated seat for me. He gave his seat to me, TTR. Mhm. He gave his seat to me. Please be wait 1 hour. I'll allocate perfect seat for you and your husband. He told like that. He speak very friendly, ma'am. Very friendly. He gave very comfortable seat, 2 seats, and he become a friend to us. Wow. Whenever you need ticket, just call me. I'll arrange it. Wow. The single magic dust working like a wow, ma'am. Seriously. Well, nice. Well. Oh, I didn't expect that result, ma'am. He gave comfortable seat for both of us. Mhm. Very Fantastic. happy, ma'am. Travel was completed very satisfiedly. And I got one more new friend, ma'am. Okay, fantastic. Excellent. More Thank you, power to ma'am. you. Thank Thank you, you. Sindhu. Thank you for the joy, the sparkling, kindling light in your eyes gives me goosebumps thinking that one small step, learning and practicing has made your life, magical. Ki, if you don't have a ticket, I would not travel. I'll cancel my ticket because I don't like discomfort. Mm. And I think being you younger, you can take the risk, and you took it and you put just the magic dust and Yes, ma'am. look at that. It's so beautiful. Thank you for learning. Thank you for Thank you, practicing. ma'am. Thank you for creating Thank miracle. you. And Thank then you. thank you for sharing. Thank you so much. God bless you. Here gives us power magical oxygen to work on. Let's we begin with chapter 15. But before we begin, every day we do a blessing prayer, divine blessing prayer. Let's we sit straight. Please, everybody should open the camera for energy to come in you, in your body, in your house, in your aura, so that it's value. You get the value out of the time you're going to invest. Otherwise, it's just like wasting time all the time. We keep wasting. Put your right hand on your heart. Close your eyes and give me a smile. Sonam, smile. Not wrinkled forehead. Calm your energy. Look at Sonam. Unconsciously, we do this. And she's not even able to listen. She's busy talking. So don't let this wrinkled forehead, stress be on your face. Sonam, Sonam, just relax your face, Sonam. What's the anxiety going on?
Please make I know that, make your forehead straight. Don't bring wrinkles on your forehead. Just take a deep breath. All the works will be done automatically. Just command the universe and the work will be done. हुआ ना टिकट सिंधु का? स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला. A daily prayer for divine blessings. Beloved divine Father, Mother, let your divine light fill my mind with wisdom and discernment. Let your divine love fill my heart with sweetness, warmness, and compassion for all. Let your divine power fill me with inner strength to do what is right and to refrain from unwholesome actions and behaviors. Komal, close your eyes. Beloved Divine Mother, gaze upon me, your beloved child, with mercy, love, kindness, and abundance. Thou art all compassionate. Thank you for your protection and thank you for your love. Everyone, put both your hands into Namaste Mudra and bow down your head. Don't let eyes open. There is a big meaning to it. You will be distracted. You will not connect to the soul, to the superpower. Put your hands together, bow down your head to one person who troubles you the most, and the thoughts of that person is also very painful. And you are unable to forgive that person and forget the incidents which happened between both of you. And you are living a miserable life and you are all the time thinking of that person and in trouble. Let's we delete and erase those memories and create magic in our life by forgiving that person. Imagine with the closed eyes that that person is standing in front of you and you're looking into the eyes of that person. Bow down your head little more. Let the ego dissolve like salt dissolves in the water. And treat that person like guru so that you have the most miraculous life. And when you imagine that person, look into the eyes and say, Atma, Namaste. I, the soul, salute the divinity in you. We're all children of Supreme God. We all make mistakes. We are all evolving. I forgive you. Feel that. You're asking for that forgiveness and you are saying that you've forgotten that person, whatever that person has done to you. And say, I seek for your forgiveness at all levels. Go in peace. So be it. May you be blessed with good health, happiness, prosperity, and spirituality. Tathastu, tathastu, tathastu. Take a deep breath, straighten your back, head straight, connecting to the superpower of the universe through your crown chakra. Repeat after me. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Check the vibrations in your body. Rub this forgiveness energy in your hands harder, tighter, and touch the place in the body where there's some discomfort. And when you touch there, say, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I forgive myself. And slowly open your eyes and let's begin reading our page 15. But before that, let's read our gold card, which is for the money. Money flows to me effortlessly. I have more money coming in than going out. Wow, universe, thank you, thank you, thank you for making me deserving to have everything I want, including money. Money sticks to me like a Fevicol bond. And thank you, universe,
for the plenty of money which you made my birthright. Thank you, thank you, thank you, universe, for healing Bunny miraculously. Thank you, thank you, thank you. Making Bunny follow gratitude lifestyle 100%, and it's already installed. Thank you, universe, for making my dreams come true. My checks, paying gratitude for that. My another check. Thank you, universe, for giving me all the money and it's going where it has to go. And thank you, universe, for the biggest amount I generated this year. Thank you, thank you, thank you. All right, let's see what magic Purnima is sharing. Thank you, thank you, thank you, Purnima. God bless you. I love it. All right, magically heal your relationships. People who are struggling in relationships, they get the deadly diseases which can take over your life. If your relations are not good, probably your healings will never be done. Whatever you're suffering at the body level, physical body level, it is only because you don't have good relationship with somebody, with someone, or yourself. The moment you dissolve that energy in you and you forgive the person with whom your relations are not good, you evolve, and you evolve to the level not only you get better relationship, even your diseases vanish, even your money conditions becomes like miraculously on the highest level, your career explodes, and you make all your dreams come true. So if you're suffering any of the illness, trust me, it's because of the relationship, because of the past memories where you had been suffering because those memories are not dissolved. And Ho'oponopono prayer is all about that. You remember in the retreat, you felt so good when I did the Ho'oponopono healing finally after giving you the initial information and taking you to the deeper level. Did you see everybody evolved? कोई ऐसा था जिस पे उसका असर ना हुआ हो? ऐसा क्यों हुआ था? One, we were totally focused कि हमने ये सीखना है. तो we had gone out of the comfort zone. वहां पे हमने जाके सीखा. Two, the energy of the room because of the gratitude was so high that we all got healed. How much of love was there? Did you see the love energy? So do you think uh, the magic was uh, in me? No, not at all. The magic was in all of you who could create that energy. And everybody was so happy. Even the children were crying. Parul's daughter. तो क्या किया था हमने? तो कुछ नहीं किया ना. We just spoke the words. So this Ho'oponopono prayer has the power to heal relationships. Healed relationships will heal your physical body, your mental body, your spiritual body, and you will evolve at all levels. So that's why healing relationship is very important. We all come from same strategy. We all are at the same level always. It's only the more people learn, the more people practice, they evolve. That's why we call them our gurus, like Pavan sir. Do you think उनके relationship में कहीं कोई मनमुटाव रहा होगा? तो नहीं रहा तो कितने evolved personality हैं आज. तो relationship पे काम करना बहुत जरूरी. जितनी भी body में diseases आती हैं, they're psychosomatics and they are coming from the bad relationships. अगर इतने महीने से आप पढ़ रहे हो और अगर भी आप evolve नहीं हुए हो, तो let's take this golden opportunity today and learn more how to heal relationships. And healing relationship will heal your financial status, your physical status, your relationship status, and there'll be love, which is the most powerful healing modality, can heal you at any level. Are you there with me? Let's listen to page 141, magically heal your relationships. If you have a difficult or broken relationship and you are suffering from a broken heart or hold any resentment
or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Who wants to heal relationship? Write down me in the chat box. Let me see how many people will bring difference in their life and they will evolve. Thank you, Jia. Wonderful. Thank you, Rajni, Namita, Nilesh. Awesome. Nikumoni. Aman, can we count how many we are? And also those who are not saying here, me. God bless you. First, we have to accept that there lies the problem. Fantastic. So, आज का काम अगर आप करते हो, आपके major difficult relationships कल तक heal हो सकते हैं. Are you there for 24 hours challenge? So, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आज आप कहाँ हो, being 1 to 10, 1 being the lowest कि मेरे relationships बहुत खराब हैं. Thank you, Namita. And 10 being the highest. So I promise you, आप मेरे को ग्रुप में या पर्सनल पे अपना लेवल बताओ, और अगर आज आप प्रैक्टिस करोगे तो कल आप कहाँ गए, will you share that with me? Show me thumbs up. Let's be healed. Let's we heal ourselves for the most prosperous life, for the most magical life. Jinga lala life, sach bata rahi hu. Today I'm living the most beautiful life. Even last, I think, 1 year in January, I was not here where I am today. So I've healed my relationship with me, myself, and people around me. I had so many difficulties. I was so much of righteousness. कि मेरे तरीके से यही सही है, तुम यही करो. I was so dominant to push people away from me, thinking मेरा तरीका सही है, इसको follow करो. Or you go. You take the highway. Don't come near me. I was that kind of a person. But क्योंकि मैंने affirmation क्या बनाई? I'm in the ocean of love. I love everyone unconditionally. पहले मैंने दिया कि मैं सबको प्यार करूंगी unconditionally. उनकी weakness को नहीं देखूंगी. उनकी strengths को देखूंगी और उनको unconditional प्यार दूंगी. Then I said, everyone loves me unconditionally. So this is a command to the universe कि मैं जब करूंगी, मैं जब बीज बोऊंगी तो मुझे वो वाला fruit मिलेगा ही मिलेगा. Then I said, I'm madly in love with myself. अब सब आप मुझको प्यार करते हो? Because I first loved myself, then I loved everybody, and now everyone loves me. मैं जानती भी नहीं थी. The girl, she's telling me सारी सारी रात अब आपकी recording सुनती हूँ. Karishma. I'm so bad at remembering names. I'm sorry. I cannot remember that, but she had messaged me. Her name is Twinkle. She's going to create Karishma. That connects to her name now. Okay. So gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or a wife, brother or a sister, son or a daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother-in-law, father-in-law, parents, friend, neighbor. Name the relationship, वो heal हो जाएगा अगर आप gratitude pay करोगे. But today we'll learn कि gratitude कैसे pay करना है relationship के लिए, ताकि ये चीजें 24 घंटे में मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. 24 घंटे में लोगों ने एक घंटे में मैजिक क्रिएट किया हुआ है. प्रशांत कुमार, who remembers him, a young boy who wanted to use 555 strategy for mending his relation with his friend, and जैसे ही उसने वो वाला पार्ट काम किया with the strategy I had given him and healing किया, उसका उसी पल उसके फ्रेंड का कॉल बैक आ गया. मैं उसको बड़ा रोकती रही कि इतना यही क्या रिलेशनशिप है जिसको तुझे हील करना है. बस उसने चैलेंज ले लिया था एंड हील, सो यू कैन डू. So when we are faced with difficult relationships or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit
grateful for the other person और कुछ भी नहीं है. सिर्फ हमारे रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड नहीं है और ब्लेम्स एंड कंप्लेन्स हैं. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. It is so evident, in so many of us. I see that when they share their story, I know what mistake they are making. Blame is never going to make a relationship better. आज आप देखना, एक दिन ब्लेम करने की हैबिट आपकी आएगी, आप ब्लेम करते रहोगे, बट फिर क्या करना होगा? एंड इट्स नेवर गोइंग टू मेक यू योर लाइफ बेटर. इससे आपकी कोई जिंदगी में अच्छा चेंज नहीं आने वाला. इनफैक्ट द मोर यू ब्लेम, द वर्स द रिलेशनशिप गेट्स एंड द वर्स योर लाइफ गेट्स. तो आप समझ लो कि आप नोइंगली अननोइंगली ये प्रैक्टिस करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, जिसकी वजह से यू आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ. कुछ भी, थोड़ा मिजरेबल, ज्यादा मिजरेबल, बट लाइफ इज नॉट ईजी. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about the other person? आप करोगे क्यों? Beautiful analogy. Holding to an anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. कोयला हाथ में पकड़ के रखोगे तो कौन जल रहा है? अदर पर्सन. उसको तो खबर भी नहीं है कि आप जल भी रहे हो. अगर वो देख ले कि आप जल रहे हो तो बहुत खुश होगा. अच्छा, मेरे साथ तूने ये पंगा लिया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ हाथ जल रहा है, तो पूरा जल जाएगा तू. So this is Gautam Buddha is telling कि holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. Choose wisely. Do whatever you want to. For example, if you have an ex partner who's connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't your ex partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest rule for their life, which is gratitude. I was exactly on this situation. I had so many blames on my husband. And if you listen to my story, you will say it was worth it. आप ब्लेम ही तो कर सकते थे इतने गंदे रिलेशनशिप के लिए. बट क्या हुआ? लाइफ दिन 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 खराब होती गई, होती गई, होती गई, एंड इट टोटली ब्रोक. इवन इफ आई वाज नोइंग ऑल. आप सबको पता है ना कि अगर मेरे बेटे को हील होना है, अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और अब ये सोचा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट किया, तो ही बिकेम ऑल राइट. तो क्या रिलेशनशिप नहीं सुधरा होगा? कोई भी कामिक जो रिलेशनशिप था उसकी सफरिंग्स एंड हो गई एंड ही स्टार्टेड हीलिंग. एंड मेरे को भी होप जाग गई कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल थी उसको अट्रैक्ट करने के लिए और मैंने ही उसको हील किया. तो if you are suffering from a broken heart or a grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then
She took the first big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had been always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you're going to look for the hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Are you with me? Those people who wrote me, do you promise me that today you're going to do the practice the way she's telling us? Then choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Everybody write down on your paper the name of the relationship you want to heal today. Everybody write the name. Let's get focused. Let's have laser focus right now. So the relationship which is problematic or broken that you want to improve. Everybody's has written the name of that person? Next step. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is past relationship and the person is no longer in your life. Doesn't matter. Even if my husband is not there, I can do this practice and heal to the next level and evolve to the next level. Are you with me? Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you've chosen. Yeah. Put it in your book and see what you have to practice. Then, once you've chosen the name, you have to write 10 things about that person. Go back to the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you receive from that relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. For example, if I remember about my husband, my relation lately was bad, but the things I saw on the first day when I got married, within the 24 hours, this life should have been broken. It shouldn't have been continued, but you have the dilemma of your parents, your brothers, sisters. In our times, divorce and breaking relationship was not in the fashion. Now it's in the fashion. First night you find that this person is not worth marriage, people walk away. And then whole universe is, supporting them to break the relation. कितना beautiful चीज है ना? पूरी कायनात लग जाती है इस relation को तोड़ दो. पेरेंट्स लग जाते हैं, हस्बैंड वाइफ लग जाते हैं, बच्चे हुए तो वो लग जाते हैं. पर पहले दिन से ही नेगेटिविटी पहले दिन से नहीं होती. बिफोर द कोर्टशिप पीरियड रिलेशनशिप स्टार्ट होता है कि शादी होनी है तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं. और इतनी ब्लेम एंड कंप्लेन गेम चलती है कि एट लास्ट वो रिश्ता टूट के ही बचता है. सो write down 10 things good about them. Now, if I look at when I've forgiven him and I've forgotten the incidences which are negative, I've got so much to share the good about between both of us. When I count those blessings, they were so small, but they were so evident. उस समय मुझे दिखी ही नहीं. मुझे क्या दिखा? He's wrong here, he's wrong here, he's wrong here. ये गलती करता है, ये गलती करता है, ये यहाँ तकलीफ देता है, यहाँ तो क्या हुआ? वो ही बढ़ गई. तो क्या हुआ? Everything finished. So, no matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. एक ही बंदा उस रिलेशनशिप को हील कर सकता है. क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो नहीं सीखेगा तो मेरे सीखने का क्या फायदा है. लिमिटेड ब्रेन. उसने किया है, मैंने तो कुछ किया नहीं. वेरी 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 लिमिटिंग एंड ब्लेमिंग पर्सन यू आर. टेक अप द चैलेंज. मानो आज एक दिन के लिए बात मान लो. मेरा ट्रस्ट बोरो करो आज और कल मैजिक शेयर करो. ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है. You can magically heal the relationship and you don't need the one person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches in all your relationships and your lives, you have to find the gold.
What is the goal? As you dig and discover the nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. For example, I'll say, Kaku, I'm grateful for all the difficult periods you gave me in my life, made me so strong that today I can deal any of the difficult situation, and I am a kind of an instrument, heal others also because of my learning. So I thank you from the bottom of my heart for making me who I am. And I'm loved by the whole world only because I learned to heal the relationship. And now your relationship with me is so magically healed that I have only love for you. तो मुझे क्या सोचना पड़ा कि क्या लिखना है मुझे इसके आगे? No, I feel that I express that, and doing both, you can see me where I am, and here you can not only come here, you can go beyond me. You can do much bigger miracles than Romi Maakan, because I'm done and I'm living the life of abundance, of love, prosperity, happiness, joy. You name the thing and I have it. How do you do that? She's giving you the practice, like for a husband and wife when their relationships are not good. How can you do it? Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage didn't end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from a marriage in many of my relationships today. Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. ब्लेम गेम में होंगे तो हम ये सोचेंगे क्या? Not at all. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. I felt it. If my husband was not there, I didn't have my son and my daughter, who are the most precious gift of my life. They are the living source. If I was not, if I didn't commit suicide, it was only because of my daughter. And I looked at her face, that who will take care of her, what her life would be. And then how does it come? Because it was only due to my husband. Isn't it? So true, so natural. So, Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was big responsibility to have all of us dependent on you. So, thank you. Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Can you see so deeper she's thinking about it? Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great news, great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. Is there anybody who can't find the gratitude in the broken relationship or the difficult relationship? Is there anyone? Don't feel shy. Raise your hand. I can teach you how to be grateful for that. If one model comes in, I will give you instant solutions, or I can move ahead if you don't want to. All right. Yes, Rajni. Can I bring you on the spotlight? Are you open to speak? Because I can't remove you from the recordings. Yes, ma'am. Yes. Tell me the relationship, whatever the name it is. I don't want to know the name. Can you tell me? Could you find good in that? Ma'am, not directly, but indirectly I can find, and I'm starting writing about I it saw it. indirectly, Okay. What did you indirectly. write? But thank you, relationship का नाम to raising that so beautifully. Thank you, relationship. Thank you for the valuable lessons I needed to learn in this lifetime about patience, forgiveness, and Wow. self-love. Excellent. Thank you, relationship का नाम, for doing household work and share the workload. Otherwise, I needed to do it all alone. Hmm. तो अभी लिख ही रही थी मैम, तो ऐसे इनडायरेक्टली मैं कर सकती हूँ, बट डायरेक्टली आई कैन नॉट रिलेट कि कभी कुछ बहुत अच्छा किया है. Exactly.
you have a husband, if it is a mother-in-law, would he be there if he was not there? No, that's it. That is why I written first line about this I'll only. give you more. I'll give you more. The way you are counting that how she is supported for the work, right? Then you can think of that the house you're living in is because it's her, efforts that she has made up this house. If she was not contributing to the family, this wouldn't have been there. Then not only your children are getting genes, you may not like her genes, but if you dig deep like gold, you will find out what good genes are in your children, which are coming from a therapy of timeline, like this is how the generations work. Then you Okay. can feel that all that was done to you for your wedding. You only are counting the bad part of it. The good is so much out there. You can't believe it. The energy which is not right in the house right now is because of you, not her. Because we are into blaming. वो तो जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे. They are not learning. But if one can heal the relationship and find the negative energy is teaching you that you don't have to be that, which is the biggest एब्सोल्युटली lesson. मैम, वो अवेयरनेस है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ बेटर करनी है. Exactly. Then, I would say, what would I say? That whatever your husband is today, the education, the money making program, the values जो आपको आज नहीं लग रही हैं, क्योंकि आज आप फंसे हुए हो एक बैड रिलेशनशिप में या बैड इंसिडेंट्स में rather than relationship, and you can't look at that. Blinds are not the blinds which don't have the eyesight. It's the vision we are blind to, and we are unable to understand what is good in every person. There are so many things to learn from them. How much my mother-in-law did good to me, I had forgotten, and I was only looking how bad she's doing. And when I just look at the bad increased, and the relationship broke so badly. So badly. And I was always asking the universe that, अरे भाई अगर अच्छे लोगों को ऐसा होता है, मैं अपने आप को तो बहुत अच्छा मानती थी, और जब उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया था उसको सब भुला दिया मैंने. गो टू द गोल्डन डेज. इनिशियली हर जगह कोई गलत नहीं होता. लगता है हमें क्योंकि हमारी आंखें वहां से ब्लाइंड हो चुकी हैं अच्छा देखने वाली साइड से, जिसकी वजह से हमें सिर्फ बुराई दिख रहा है. कई लोगों के यहाँ मदर इन लॉ नहीं है, उनसे पूछो उसकी क्या वैल्यू है. उनको कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है. सिस्टर लॉज, ब्रदर इन लॉज, फादर इन लॉ, ऑल अलोन. तो वो जो एक कुटुंब की जिम्मेवारियां होती हैं, वो लोग ही निभा रहे होते हैं, और वो आज तक निभा के आए हैं. अब आपको वो जो लेगेसी है उसको फॉलो करना है. सो आई एम श्योर जितना भी कोई बुरा बंदा होगा उसमें अच्छाई जरूर होगी. अगर आप पर्सनैलिटी प्लस पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आप उसकी खूबियां कहाँ देखोगे. सम पीपल आर वेरी गुड एट मेंटेनिंग अ गुड किचन, गुड होम. सम पीपल आर वेरी बैड एट दैट. बट क्वालिटी हर एक में होती है. ये बात अलग है कि हमें दिखना बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस. तो वो आज वो वाला नजरिया क्रिएट करना है. और जब हम, ट्रस्ट मी, लेट मी कम टू द गैलरी, जब हम किसी दूसरे में कुछ अच्छा देखते हैं ना, जब हमें दिखने लगता है ना अच्छा, तो हम इतना इवॉल्व हो जाते हैं तो हम उनकी वीकनेस को देख ही नहीं पाते. वेयर फोकस गोज इट ग्रोज. आप देखो कहाँ देख रहे हो, वही बढ़ना है. ये एफर्ट करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा अपने पे. वो वाला इंटेलेक्ट होना पड़ेगा जो सिर्फ अच्छा ही देख पाए. तो आई डोंट नो आपके हस्बैंड में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज हैं. अगर आप वो देखोगे तो वो उनके जीन से कनेक्ट होंगी. जो आपको पसंद है या ना पसंद है वो बात अलग है,
बट अच्छा तो हर चीज में, हर किसी में होता है। जब हमने ये हम्म, मास्टरी कर ली ना किसी में अच्छा देखने की, आई कांट टेल यू हाउ मिराकुलस यू विल बिकम। जिस दिन हमने ये आदत छोड़ दी उसमें बुरा देखने की, उसी दिन से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 360 डिग्री। बट आर यू रेडी टू डू दैट? Yes, ma'am, because I did a tarot spread yesterday about my kid and वहाँ पे मुझे इसके इम्प्रूवमेंट का अपनी एंजाइटी और अपने स्ट्रेस से बहुत कनेक्शन दिख रहा था। हम्म। तो जो There you इफेक्ट are. इसमें इसमें जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, मतलब अगर इम्प्रूवमेंट्स हो भी रहे हैं ना, तो वो शायद इग्नोरेंस में जा रहे हैं। जैसे कल मैंने नोट किया कि इसने रात को, मैं इसको पढ़ा रही थी, फेस्टिवल्स पढ़ाती हूँ ना, मतलब ऑल इन वन बुक है तो उसमें से पढ़ाती हूँ। तो कल मैंने पढ़ा रही थी, मैं काफी दिन से इसको टीच कर रही थी, आई गेस अबाउट 15-20 डेज, फेस्टिवल्स के नाम। तो हम्म, जन्माष्टमी बहुत टिपिकल नाम है बोलना, बट हम्म, इसने जश्मी जश्मी करती रहती थी बट कल रात को इसने बोला जन्माष्टमी, तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना। फिर मेरे को लगा हम्म। यार, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, सीख रही है वो हम्म। सीख रही है, आपको देखना हमारे में है कि वो पेशेंस, कैसे सीख आप रही में है। पेशेंस आ गई अब ना। पहले तो जब इतनी बड़ी चोट लगती है, ऐसी जिंदगी बच्चा जिएगा और हम जिएंगे, वो जो शौक है उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। और फिर हमें वो तो निकल गई मैम। निकल चुके हो, फिर हम इतने डिवास्टेड होते हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, है ना। फिर वहां से जब आप अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करते हो तो अब आपको अच्छा दिखना, क्योंकि मैंने आपका फोकस अच्छे पे डाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड एंजाइटी से निकलना, हम अगर निकलेंगे तो ही हम एंशियसनेस को डिमोलिश कर पाएंगे। So I'm so glad, I'm so grateful for being vulnerable and for learning the way you are learning. The day is not far when the dream of mine will come true, that you heal your child to the next level. थैंक यू सो मच मैम, अंडर योर गाइडेंस आई गेस इट इज पॉसिबल। एंड सब लोगों की एनर्जी यहाँ पे जो है ना, Yes, बहुत वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव है। yes. तो मतलब अगर आप कुछ ना भी करो ना, सिर्फ सुनो बैठ के, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। Thank you so much. Thanक you. So I'm there to see थैंक that यू मैम। miracle tomorrow in 24 hours. That how did you change yourself? Thank you for यस, learning. इन Thank you for, रिलेशनशिप। yeah, यस मैम। imbibing, and thank you for creating the miracles. I'm थैंक यू very मैम। optimistic, and I'm 100% sure we'll bring that change in, because I know anything can be done. It's in our hand. The destiny is in our control, and we can create that. मैम रिलेशनशिप का अगर मैं बोलूँ ना, तो मेरा शायद कोई पैटर्न है जो अप एंड डाउन चलता है। मतलब एट टाइम्स मैं अपनी एनर्जी बहुत हाई कर लेती हूँ, लाइक मैं जो रीकी सीखी हुई है, मोडालिटी सीखी हुई है, अगर मैं प्रैक्टिस कुछ दिन कर लूँ, मेरी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने पास्ट में क्या क्या किया मेरे साथ। बट That's कुछ good. दिन बाद वो होता है, आई डोंट नो एनर्जी इफेक्ट होता है क्या होता है, बट फिर वैसा हो जाता है। तो वो लूप चल रहा है, मुझे उस लूप से बाहर निकलना है क्योंकि मुझे इवॉल्व करना है। उसको उसको पहचानो ना, वो क्या है। मेरे को पता है वो क्या है, बट मैं नहीं बोलना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप जब आइडेंटिफाई करोगे तो डिमोलिश तो मैं ऐसे कर दूंगी एनएलपी से। ऐसे बोलो तो एक सिटिंग में यू विल बी आउट ऑफ इट। आई गेस इट इज रिलेटेड टू इनर चाइल्ड, क्योंकि बचपन में भी मदर फिगर है ना ये जो, नो, क्योंकि मेरी मेरी ये खुद की मम्मी नहीं थी, तो वो तो वहां से भी बहुत कनेक्शन कुछ है, चला वो आ रहा तो है। एक एक इंसिडेंस है। पर हम्म। उसका आउटपुट क्या है, हमने उसको पहचानना है। हम्म। उसको पहचानने में जान लगाओ आज। Okay, all डन। right. Thank you so थैंक much यू। for, God bless you. I love you. By the time you finish your gratitude list of 10 things, you should feel much better about that person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards that person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward that person anymore. So if you really want to heal this one particular relationship, until and unless आपके प्रति उस इंसान के आपका प्यार उस इंसान के प्रति मैड इन लव ना हो जाए, तब तक इस प्रैक्टिस को मत छोड़ो। क्योंकि वंस यू डू दैट, इसकी छोटी सी प्रैक्टिस है, रोज 10 थिंग्स देखो कि क्या अच्छी है उस रिलेशनशिप में, लिखो नहीं भी,
देखना भी शुरू कर दोगे तो आपकी विजन बदल जाएगी, विजन बदलेगी तो रियलिटी बदलेगी. ओके. So if you are using gratitude's magical power to improve our current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change the relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life, nobody else. नॉट ओनली वो रिलेशनशिप हील होगा, आपकी पूरी कायनात बदल जाएगी. आपका पैसा इतना ज्यादा आ जाएगा आपके पास, आपका करियर फ्लरिश करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी. So if you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. With that, we come to an end of today's reading, and let's know what to practice. Put the pointers, write down what you have to do, and do it. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Today, if I will write the gratitude, I will only write for the relationship which is already good. And read your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic relationship that you want to improve. एक relation जो बहुत बुरा है, उसको choose करिए. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you've chosen. Write it down in the following way. For example, Kaku, I'm so grateful for all the difficulties you put in my life, transformed with love and looking at your good things. And there were so many. I'm so sorry I ignored them, but now I see only the good in you. That's how I'm improving my relationships with everybody in the world. You were the source from where I could learn how to keep my relationships up, full of love. That's how I'm living the life of abundance in all the areas of my life, and I'm healed at all levels. And just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. With that, I come to an end to the complete part of it. And tomorrow is magic and miracles in health. People who are struggling in health, like relationship today, if you do it, the health is the next chapter, which is totally connected. And if you connect today or tomorrow, you can create the magic, is my guarantee to you. With that, I come to an end, and time is 8:39. We will just close in another 6 minutes. If anybody has to share anything, can share, or we can close the session and see you tomorrow. Yes, Deepak. मैम पहले इसका सुन लो. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैम मुझे आपको एक फ्लावर देना था. थैंक यू मेरे बच्चों. ये देखो मेरे तक पहुंच गया. मैं अभी दिखाती हूँ. आपने जो फ्लावर्स दिए हैं ना, देखो अभी जादू से मेरे पास पहुंचने वाले हैं. Shall I show you? Thank you so much for the flowers. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Mishtu. I love you. मैडम कल क्या हुआ कि ये मैंने ऐसे ही मैं जनरली क्या वैलेंटाइन पे भूल जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ भी देना. बट अभी इस बार एक सेकंड, अभी दिख रहा है क्या मैम? Yes. हाँ, तो मैंने ये दिख रहा है क्या अभी कि नहीं दिख रहा? आपका आपने वो बैकड्रॉप ऑन किया हुआ ना, तो फिर चीजें इधर उधर हो जाती हैं, दिखती नहीं है. अच्छा, ओके ओके, समझ गया. तो नन कर देता हूँ उसको. हाँ, अभी दिखेगा मैम. तो बेसिकली मैंने ये इसके सहाना के लिए, मानवी के लिए और पूजा के लिए. तेरा का है बकेट तीसरा? मेरा बकेट ही वहाँ है. हाँ, और एक और बकेट कहाँ है? हाँ, ये रहा तीसरा बकेट. ये
ये तीनों मैंने बनवाया। मैं सोचा कि अगर सिर्फ इसके लिए ले जाऊंगा पूजा के लिए तो ये लोग मेरा माथा खाएंगे। तो मैंने सब में अलग अलग फ्लावर्स रखवाए। एक के हाँ अंदर ये वाला रखवाया, एक के अंदर येलो, और पूजा वाले के अंदर सब मिक्स करा है। तो ये हाँ लोग इतना खुश है ना मैम। मतलब बताओ कितनी छोटी इवन, छोटी खुशियां हैं। या मतलब इतना मजा आ रहा है इनको खेलने में। एंड इवन वाइफ वाज सरप्राइज कि यार ये तो कभी इसको याद भी नहीं रहता है ना ये कुछ करता है। क्या फॉर था, द बर्थडे था, क्या था, कोई ओकेजन था? कल वैलेंटाइंस था ना मैम। ओ मेरे को तो यही भूल गया। यस ओके, मैम, कल फैंटास्टिक, वैलेंटाइन। हाँ, फैंटास्टिक। तो वो हुआ। और फिर क्या हुआ मैम कि अभी मैं जब बैंगलोर गया था ना, हम्म तो बैंगलोर गया था, और फिर पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट, बट समथिंग ट्रिगर्ड इन मी जब मैं रिटर्न आया वापस यहाँ हम्म पे। हम्म एंड फॉर 2 दिन मेरा, फॉर द इन मेनी मेनी मंथ्स, फॉर द यू कैन से फॉर 2 days आई वॉज टोटली ऑफ ट्रैक। मतलब आई वॉज फीलिंग सो इरिटेटेड, आई वॉज सो एंग्री लास्ट 2 दिन, हाँ 2 ढाई दिन। एंड इट स्टार्टेड विथ वन सिंपल इवेंट, मतलब जहाँ पे आई थिंक वी हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ माई वाइफ, कुछ तो हुआ या ऐसा कुछ। और पता नहीं इट स्पाइरल्ड आउट, मेरे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट कल वापस से मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि ये पता नहीं क्या ट्रिगर हुआ, बट आई केम बैक कि यार भाई ये, फिर मैंने वापस से ग्रेटिट्यूड चालू किया। तो मेरे को समझ में आया कि यार अपन वी एट एनी पॉइंट इन टाइम वी शुड नेवर टेक दिस लाइटली, कि ये जो चलना है, अ, इसको जब तक आप बिल्कुल आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाए, यू कैन ऑलवेज डेविएट फ्रॉम दिस। क्योंकि जैसे, एंड देन आई रिकलेक्टेड जो आप बोल रहे थे कि जैसे वो नवरूप जी भी आए थे, दीदार जी, और कितने सारे लोग आए गए। तो पीपल स्टार्ट, एंड देन व्हेन दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जैसे रोंडा भी बोलती है, व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो फिर आपका वो यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी। तो प्रोबेबली समवेयर आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं बैंगलोर में बहुत मजे कर रहा था, एंड आई फॉरगॉट। हेलो, मजे तो कर सकते हो आप। नहीं, मजे कर रहा था और ग्रेटिट्यूड पे कर रहा था मैम। मैं, ऐसा नहीं है, मैं तो दोस्त को भी सिखाया, उसकी बेटी को भी सिखाया कि इनको थैंक यू बोलो, इसके लिए थैंक यू बोलो। लेकिन पता नहीं समथिंग, प्रोबेबली आई डिड होपोनोपोनो ऐसे ही किसी चीज के लिए, और उसके बाद से ये ट्रिगर हुआ। आई डोंट नो मैम, ये होपोनोपोनो से ऐसा होता है क्या, कि कुछ चीजें ट्रिगर होती है कि नहीं? नहीं, ऐसे ट्रिगर नहीं होती हैं, जब हम ग्रांटेड लेते हैं तो ही ट्रिगर होती हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट। क्योंकि हम्म हम हम्म उसको कनेक्ट करेंगे तो हम उससे दूर भागेंगे, तो वी आर गिविंग अ रॉन्ग मीनिंग टू ओपन ओपनो। तो अगर वो गॉट हुई भी है तब भी हमने ये नहीं मानना कि उससे इट। होती है। क्योंकि हम हाँ, फिर उसे करना भूल जाएंगे या नहीं करेंगे, तो फिर दैट्स नॉट एन आंसर। द आंसर लाइज इन ओनली डूइंग इट इवन इफ इट्स हैपनिंग दैट वे। राइट राइट तो राइट, सो हो ट्रू मैम। सकता है आपने होपोनोपोनो नहीं किया तो हुई हो, आई डोंट नो, यू लुक हम्म बैक। Yeah. हम्म, But the realization is you came back to the frequency. यस And मैम। when the time goes tougher, when we take it granted, it's a cycle. The guaranteed, then it goes to the worst. The first has to bring the best of the miracle, and then again gratitude, and then again granted. This is going to happen this way. हम्म, सो So, ट्रू। so what अगर हुआ है तो? करेक्ट। तो अभी अभी वापस से भाई बोले कि यार वापस से आप तो वो हो गए, अब आपको कोई चिंता नहीं हो रही पैसों की वगैरह। एक्चुअल में क्या हुआ था, पैसों का भी थोड़ा सा चिंता चल रहा था कि एक्चुअली वी वर जस्ट रनिंग आउट ऑफ फंड्स। तो शायद वो भी एक ट्रिगर था। सो वी टुक अ गोल्ड लोन When you हमको have a ले। coach to coach you from all areas, you don't run into these problems. यस मैम, सो ट्रू। वही होता है You ना are कि creating try and error method. जितना मर्जी delay कर लो, we all need a coach. यस, And we दैट्स ट्रू। have the golden opportunity, you are getting me in peanuts, but you are doing your way because you are choleric. They are little difficult to tame, choleric people. They are born leaders and they create their own path. I was like you. But the only good thing in me was that I was very teachable.
if I've got a hint, at times Aman really gets furious at me taking a massive action. But I find that a guided action, वो या तो एक lesson देगा या वो मुझे growth देगा. So I took the training from Mitesh in 3 lakh rupees, one on one, Oh, okay. when I didn't have the money. I was at your stage, Okay. when I was मैम, struggling from day to day life. so true, मैम. मैं अभी So, अमन जी को बोल के वो कर देता हूँ. लेट्स गेट because स्टार्टेड. हो गया डिले देखो, बहुत. वो भी टाइम अपने आप आना है. जब तक आप इस डिफिकल्ट जर्नी से नहीं गुजरोगे, यू विल नॉट टेक अ यू टर्न. सो ट्रू. आप अगर नहीं लेते हो तो मेरी लाइफ बहुत आसान है. आप लेते हो तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. बट आई नो यू डिजर्व इट, इसलिए मैं पंगे लेती रहती हूँ. यस मैम. वो मैम मतलब मैं सही बता रहा हूँ. एक चीज ये भी है कि इतने सारे यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्राम वाले हैं जो मैनिफेस्टेशन सिखाते, लाइफ कोचिंग सिखाते, बट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो मैंने सिर्फ आप में देखा है कि या इट्स नॉट देयर. इफ यस इट्स नॉट देयर, दे ऑल आर जस्ट मनी मेकिंग. वो वाली चीज है कि ये हुआ और वैसा. बट द थिंग इज वो जो कंट्रीब्यूशन, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में है, वो मैंने कहीं भी नहीं देखी. मतलब पता है हम क्यों है? भटक भी वो भी जाएंगे. क्यों है? पता है क्यों है? उसका भी एक कारण है हम्म. कि मेरे में इतना पैशन है उसके लिए करने को, तो मुझे कुछ भी स्टॉप नहीं कर पाता. अगर आपने नहीं भी पैसा दिया, मैं तो काम कर ही जा रही हूँ. सही बात है. ट्रू. मैं तो बता ही जा रही हूँ आपको इस चीज की जरूरत है, आपको इस चीज. जब आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, तब आप मेरी भाषा सुन पाओगे, समझ पाओगे, और फिर आप एक्शन लोगे. सो ट्रू I, मैम. I don't want my children, you're my children, you know that I treat you as my children, to struggle even one day. I don't want Bunny to struggle one day. I'm ready to take the responsibility, but अगर आप मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देना चाहते तो मैं आपका क्या ही बिगाड़ूंगी. यस. नहीं मैम. और मैम अब तो लेना ही है क्योंकि कल यू कैन टेल इट विच एवर वे. कल मैं शाम को मेरा नेक्स्ट वीक का प्रिपरेशन कर रहा था, एआई का पढ़ाई कर रहा था. मेरे को कल ऐसे ही आया, इतने टाइम से वो पेंडिंग था कि आई वांटेड टू लॉन्च माय ओन B2C कोर्स, B2C एआई के ऊपर. अभी तो ऐसे ही आपको मैंने, मेरे को भी एक रिटर्न गिफ्ट देना है, वो कब ड्यू है वो मुझे वो भी नहीं पता. हाँ वो वाला ना मैम. ठीक है, हाँ, ये अभी मैं ये चालू कर रहा हूँ, इसके साथ ही वो कर दूंगा साथ में. चलो. ठीक है, वो मैं आपके लिए बना दूंगा. तो क्या हुआ कि ये मैंने ऐसे ही एआई के साथ बैठ के और मैंने उससे एक मैसेज बना के व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दिया कि आई एम लॉन्चिंग माय फर्स्ट जेन एआई कोहर्ट. सो इट्स फॉर बोथ नॉन टेकीज एज वेल एज टेकीज हु वांट टू अपस्किल इन जेन एआई, एज जेन एआई हैज बिकम मैंडेटरी फॉर एवरीवन, फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ. और मैम रात को डाला मैंने 9, 9, 9:30 10 बजे कुछ. और अभी क्या हो रहा है, अभी 9 बज रहे हैं, मेरे पास 17 एंट्रीज आ गई. और मैंने उस पर लिख रखा है इट्स अ पेड कोर्स, नॉट अ फ्री कोर्स. अब मुझे नहीं पता कि वो 17 में से कितनी कन्वर्ट होगी. कैंसिल कैंसिल सारी हो. बट द थिंग इज मैंने सारी सोचा कि कन्वर्ट यार, होंगी. हाँ सारी सारी कन्वर्ट होंगी. कन्वर्ट. यस सारी कन्वर्ट होगी. और मेरे को लगा था डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, एड्स, ये सारी चीजें चलानी पड़ेगी सिर्फ. और मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, मैंने ना लिंक्डइन पे उसका प्रमोशन किया, ना किसी और चैनल पे. मैंने सिर्फ तो मेरे लिंक्डइन पे व्हाट्सएप, जाएगा तो क्या होगा? लिंक्डइन पे जाता तो मैम और भयंकर आते. एग्जैक्टली. सो कोई बात नहीं है, फ्लावर्स हम्म, पकड़ा दे. कोई बात नहीं है. अगर तब नहीं हुआ तो अब हो जाएगा. जब जागो हाँ. तब सवेरा. यस मैम, सो ट्रू. और कल ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने वो डाला व्हाट्सएप पे, उसके 5 मिनट बाद वो जो एक एक इन्वेस्टर से बात चल रही थी हमारी, तो उस इन्वेस्टर का मेरे पास मैसेज आता है, कैन वी टॉक. और मैं बोला यार, अभी तो ये 2-3 दिन बीच में तो बिल्कुल गायब था, बात करने का इनको कहाँ गया बुलाना. था. ओह. हाँ. कहा है थैंक यू. दोनों? दोनों कहा है? हाँ मैं दिखाता हूँ. मैं उनको बताऊंगी तुम्हारे फ्लावर्स मेरे तक भी पहुंच गए हैं. मैजिक हो देख गया. मैम के पास पहुंच गए फ्लावर्स मैजिक से. मिस्टो, देख मैम के पास फ्लावर्स आ गए.
जैसी आपने भेजे मेरे पास भी पहुंच गए फ्लावर्स, मैजिक हो गया। वाओ। मिशु, लुक एट दिस। मिशु, लुक एट दिस। आप मेरे को फ्लावर्स दे रहे थे ना, देखो मेरे पास आ गए। ये बच्चे जादू ही मान सकते हैं, बड़ों को तो समझ में आ जाएगी, वो जादू नहीं मानते। सो ट्रू। वहां पे जब मैं दोस्त के यहाँ गया था तो उसकी जो डॉटर थी, तो मैं उसको यही बोलता था कि अपन ये जब थैंक यू बोलते या नाम जाप करते तो मैजिक होता है। बोलते सच में मैजिक होता है? मैं बोला हाँ सच में मैजिक होता है। तो उसको मामू बनाने के लिए जेप्टो से ऑर्डर कर देता था। फिर वो इधर उधर जाती थी, आ जाता था, ये देखो मैजिक। बोलते अरे वाह। मैं बोला मेरे पास मैजिक वैंड भी है। बोले मेरे को भी चाहिए। तो बच्चे बेचारे बिलीव करते हैं मैजिक होता है, हम हाँ बड़े तो मान बैठे ही कोई मैजिक नहीं है। मैम, लेकिन सच बताऊं कि अपन भले ही मानते कि मैजिक नहीं होता है, लेकिन अ, एक तो जो अपने लाइफ में रोज मिराकल होता है जो अपन लोग ऑब्जर्व नहीं करते। दूसरा मैम, अगर आप देखिए ये जो हमारे संत या सिद्ध होते हैं, इतनी सारी सिद्धियां होती है। जैसे वो बागेश्वर धाम बाबा है कि वो बिना कुछ वो किए पर्चा बना देते या जो भी। तो इसका मतलब कि मैजिक तो है, हर तरफ है। द ओनली थिंग इज द पीपल हु आर फोकसिंग, द पीपल हु आर रेजिंग देयर अवेयरनेस टुवर्ड्स मैजिक, दे आर क्रिएटिंग मैजिक। एंड व्हाट यू आर टीचिंग इज द ट्रू वे कि कैसे उसको लेजर फोकस किया जाए। ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं बोल रहे कि भैया आप साधु संत ही बन जाओ सब छोड़ के, लेकिन हाउ टू बी इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड क्रिएट मैजिक, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि सब लोग तो छोड़ के जा नहीं सकते वो Yeah, कर। and Amit has given a very good difference between a magic and a logic. Just All see his game of magic, last chat. He's all saying, game of magic versus logic. yeah. Yes, Amit. Bataya and done, and you have that और vision and personal touch. All game of magic versus logic. सही बात है। मैं भी इतना कुछ जानने के बाद भी मैं बहुत लॉजिक थी एंड कुछ चीजें नहीं बदली, बट जैसे जैसे that change I brought in me and that change you are seeing in me. यस मैम, Perfect. Anything you सो want to ट्रू। say? और मैम आज क्या हुआ कि मैं वेट कर रहा था, क्योंकि हम यूट्यूब पे चलाते हैं आपका, जिससे बच्चे भी सुने। तो आपका ऑनलाइन आया नहीं था, तो मैं बार बार वो आपके चैनल पे जा रहा था यूट्यूब पे। तो वहां पे अमित जी का एक पुराना वीडियो दिखा मुझे। मतलब वो अमित जी ऑडियंस में थे, जहाँ पे कोई तो थे कोच, वो पेंडुलम वाला कुछ बता रहे थे Yeah. कि He is चक्रा। master in that. हम इनको बोल रहे थे आप हमें वहां पे पेंडुलम सिखाओ। अब अगली अच्छा, रिट्रीट पे हम पेंडुलम करेंगे। है अमित, आर यू देयर? अगली। अरे वो चक्रा मेडिटेशन भी करा दो ना सर। मैं वो बच्चों के हाँ। चक्कर में अटेंड ही नहीं कर पाया था रिट्रीट पे। Yes, आई Amit, वुड next time you are teaching us pendulum. Be हाँ, prepared. इस दिस टाइम आई सेड ना थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस करके देन डेफिनेटली आई डू Yeah, दैट। even Shweta is very हाँ, good at that. You both can take ओके it up because उसकी भी practice बड़ी अच्छी है इस पे। ओके। तो तुम दोनों कर अभी दो। थोड़े दिन पहले ही आई थिंक आई टोल्ड यू दैट मेहर मेरे पास आई, वो लेकर आ गई पेंडुलम, क्योंकि आई कीप इट दैट इन माय टेम्पल ऑलवेज, सो इट इज Yeah, केप्ट powered, देयर। empowered. हाँ, इट इज हाँ, पावर्ड। सो बोली कि ये काम करेगा, मेरे को एक बार कराओ। एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस एंड लाइक it gave answer all the answers, and she was like so mesmerized. Wow, it's like giving me the right answer. fantastic, fantastic. No, we will learn together and we will Yeah, practice together. And I would love you to answer people with the pendulum. yeah, yeah. Beautiful, वाह। beautiful. अमन, अमित उसको और चक्रा हीलिंग को इकट्ठे करते हैं ना, ताकि पता चलेगा कौन से एरिया में काम करने की जरूरत है, कौन से चक्रा पे काम करने एग्जैक्टली। की जरूरत है। तो फिर रिजल्ट हाँ, और बेटर आ जाएंगे। इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, ठीक All है। right, yeah, we can add Shweta there for the ओके pendulum, and you do the chakra so that they both can go together. ओके ओके। All right. Yeah, we'll या think over that way. Aman, you can write the points and we can turn them into magical. Thank you so much, Deepak, थैंक यू सो Amit, मच। for your inputs. For the most magical life, be the magic does on you and all your endeavors, and you create a legacy for your generations to cherish. So be it, so be it, so be it. आई एम Yes. साइनिंग अप मैम फॉर योर कोर्स टुडे। Oh, thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Yes.
Rupali, हैप्पी शिवरात्रि मैम। happy Shivratri. मैम मेरा कोई बहुत ज्यादा मैजिक नहीं है, बट छोटा सा ही अभी हुआ ये कि मेरे कलीग ने मुझे वो कोई फेमस टेम्पल से आगरा के टेम्पल से कुछ फ्लावर्स लाए थे, तो उन्होंने मुझे दे दिए कि तुम इसे अपने रूम में लगा लेना। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? तो फिर उसके बाद मैंने मतलब मन में सोचा कि कोई मंदिर तो है नहीं, मैं अपने रूम में ऐसे फ्लावर्स का क्या करूंगी। बट देन आफ्टर दैट मैंने आज मुझे रियलाइज हुआ अभी जब मैं उन फ्लावर्स का मतलब मैंने चढ़ाए उनको, मैम उसमें से लोटस निकला, लोटस पूरा इतना Wow. बड़ा लोटस। और मैंने कहा लोटस तो कभी जिंदगी में छुआ ही नहीं है, मैंने अभी तक नहीं छुआ था, और अब मैंने उसको मतलब महादेव को ऐसे किया, मतलब उनका पूजा किया, उससे उसको ऊपर चढ़ाया, तो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद आज फास्टिंग था, तो मैंने सोचा कि मिल्क रख लेती हूँ, क्योंकि फास्टिंग में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, तो मिल्क पी लूंगी। बट उसके बाद ना मेरे दिमाग में थॉट आया कि मिल्क तो मैं पी लूंगी, उसमें क्या है, फास्टिंग करूंगी अच्छे से, मैं महादेव को दूध चढ़ाती हूँ। मैंने मतलब मैं दूध ना एक्चुअली मैम होता क्या था कि मंदिरों में दूध ऐसे वेस्ट हो जाता है नालियों में जाके, तो मुझे ये लगता था कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो वो वेस्ट बन रहा है नालियों में, इससे तो अच्छा किसी को दे दो। तो मैं बच्चे को एक दूध की थैली दे देती थी अक्सर, मैं मेरठ में ये करती थी, क्योंकि वहां तो वेस्ट होना है। पर यहाँ तो ऐसी नालियां है नहीं, यहाँ तो सारा पॉल्यूशन फ्री है, बिल्कुल पहाड़ों पे हूँ, तो वो मिट्टी के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाएगा, ये सोच के मैंने महादेव को जल चढ़ा वो दूध मिल्क और वाटर मिल्क लाके चढ़ाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत पीस महसूस हुई। तो मैं अभी मंदिर से आई तो मैंने सोचा आई शुड शेयर दिस। इट वाज अ मिरेकल। Yeah, of course. लोटस नहीं मिला था अभी तक मुझे, ये बहुत बड़ी बात हुई थी। More magical dust on you for your मैम more. ग्रैटिट्यूड लोटस। Exactly. So more magic dust on you for more miracles in your life and you live the life of abundance. So be it, so be it, so be it. With that, we come to an end. Thank you everyone for joining every day. Thank you everyone for learning every day. Thank you everyone for being my backbone. Thank you everyone for being my strength. Thank you everyone for learning together. Thank you everyone for doing the task together. Thank you everyone for being accountable, posting your task every day in the group. Thank you everyone for creating miracles. Thank you everyone for sharing miracles. Thank you everyone for the learnings you're learning. Thank you everyone for sharing your sharings. And everything you're doing is magnificently becoming more and more magnificent, and have a day full of magnificent outcomes. Looking for the magic you want to create today and share it tomorrow. With all that, love you to the moon and back. See you tomorrow morning. And today evening for the 365 days, 7:30 is the session. We'll be learning next level of relationship. And hopefully, I think it's the last lesson of relationship. And be with you. Love you all. God bless you. Let's all put magic dust on mom. She's already healed. And let this magic dust go to every cell of her body. And she's transmuting all her difficult and negative energies into magic. And that magic dust of all of us is going to mom and from mom to all of us, so that we reap the rewards, and 10 folds, 100 folds, million more folds, and billion folds it gets back to us, and we create the magical life for each one of us and create a legacy for our generations to cherish. So be it, so be it, so be it. Thank you for joining. See you in the evening session who are there in 365 days. For those who are in magic only, we'll see you tomorrow morning at 7:30 with the next lesson. What's the next lesson? Health, magical miracles in health. So be